And now our performer of the year. Hi investors, welcome to SOIC. Hopefully, I'm audible to all. All right, so I'll just share the screen. So a lot of questions are asked. So we'll be taking 22 to 23 most commonly asked questions. So they'll be on different businesses and industries also. All right. So hopefully all of you are excited for this session. We are doing a question and answer session. And going forward, हम Q&A थोड़े ज़्यादा करेंगे. Industry analysis हम once or twice a month करेंगे. And we'll do a lot of Q&A so that all your questions and queries are solved. Right? Great. So just before I start, a standard disclaimer that we are SEBI registered research analyst and nothing in this presentation is a buy or sell recommendation. I'm just answering questions. I'm not giving you any target prices or any live price updates. It's just जो भी questions के answers हैं, they'll be based on fundamentals of the industry and the business. Nothing else apart from that. Right. Awesome. If you're excited for the session, do smash the like button as well. So with this, let's start the question. And first question is from Ankit Chaudhary. So Ankit Chaudhary has a question ki I have unrealized loss of 40% on one of my portfolios, 30% weighted stocks. I'm confused what to do as my capital is stuck. I don't want buy or sell call, which anyways we can't give you a buy or sell reco, but want to know how to handle this type of situation. Please answer my question, sir. राइट सो यहाँ पे वी आर नॉट आंसरिंग अ बिजनेस स्पेसिफिक क्वेश्चन बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिए वेन एवर बुल और बेयर मार्केट हैपेंस राइट सो बुल और बेयर मार्केट साइकिल्स देखते हैं सो व्हाट हैपेंस इज दैट जब बुल मार्केट्स होती हैं तो जनरली इफ यू आर अ गुड स्टॉक पिकर व्हाट हैपेंस इज दैट योर हिट रेट गोज टू 7 to 8 आउट ऑफ 10 जनरली अगर आप अच्छे स्टॉक पिकर है तो आपका हिट रेट 70 to 80% चले जाता है आउट ऑफ 10 इन द बेयर मार्केट व्हाट हैपेंस द सेम हिट रेट possibly might fall to anywhere between 2 to 4 out of 10, right? The reason being because the market structure breaks down, and in this scenario there are two things that you need to do: either extend your time horizon or deal with it via asset allocation. But जहाँ पे इनका ये क्वेश्चन है तो आई थिंक द पर्टिकुलर नेम ऑफ द बिजनेस आई बेसिकली यहाँ से मैंने विदहोल्ड करा है बट जो अगर आप बिजनेस पढ़ते हैं तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि बिजनेस के नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स कैसे हैं राइट अगर कंपनी बार बार कॉन कॉल में आके कह रही है कि हमारी डिमांड में बहुत इंपैक्ट हो रखा है, नियर टर्म डिमांड अच्छी नहीं लग रही, राइट, एंड और भी प्रॉब्लम्स है, देन इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक because having 30% weightage in a stock in a business which has near term headwinds to medium term headwinds, that can become a huge problem. And also just look at it from this perspective कि स्क्रीनर पे जो पी रेशियो आप देखते हैं उसमें अदर इनकम इंक्लूडेड होती है. तो जैसे इन्होंने यहाँ पे जिस बिजनेस का एग्जांपल लिया, अगर आप वहाँ पे अदर इनकम हटा के देखेंगे तो पी रेशियो शायद से 75 to 80 टाइम्स की है एंड नियर टर्म डिमांड डी एक्सेलरेट हो रही है. तो यहाँ पे देयर आर कपल ऑफ वेज दैट यू कैन डील विद सच प्रॉब्लम्स इफ यू हैव टेकन सच अ बिग वेटेज. तो पहली चीज क्या है कि बुल और बेयर मार्केट हो हमें क्या चीज इंश्योर करनी है? सर्वाइवल. वाई सर्वाइवल? बिकॉज सी इफ यू कीप सर्वाइविंग देन यू विल हार्नेस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? तो आप कंपाउंडिंग तभी हार्नेस कर पाएंगे अगर आप सर्वाइव कर पाते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड सितंबर से लेके अभी तक 10 to 15% ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड्स आर डाउन. That is the reality. Some of them are even down 20 to 25%. Good ones are down between 5 to 7%. जहाँ पे I think they were sitting on cash, or some of them picked business as well. So that is a hit rate of different funds. But if you ensure survival, then it becomes easier. And एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्टिव इन्वेस्टिंग में सर्वाइवल मुश्किल क्यों हो जाता है? इसका मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल रीजन बताता हूँ. सपोज करते हैं आपके पास 30 स्टॉक्स है, राइट? आप ही मेरे को इसका आंसर बताइए. म्यूचुअल फंड के अंदर अगर 30 स्टॉक्स है तो आप क्या देखेंगे? नेट एसेट वैल्यू. अगर आपके पास पर्सनली 30 स्टॉक्स हैं और उसमें से 7 इन लॉस हैं एंड 23 इन प्रॉफिट हो, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? 23 इन प्रॉफिट पे ज़्यादा जाएगा या जो 7 इन लॉस है वहाँ पे ज़्यादा जाता है? आपके हिसाब से क्या होता है उस सिनेरियो में? व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन दैट सिनेरियो कि जहाँ पे आपके पास अगर 30 स्टॉक के पोर्टफोलियो में आपके 23 प्रॉफिट में और बेसिकली 7 इन लॉसेज हो, तो आपके हिसाब से उस टाइम पे क्या होता है? आपका पूरा दिमाग कहाँ लगा होता है? द आंसर इज पूरा दिमाग पूरा का पूरा दिमाग कहाँ होता है कि यार ये स्टॉक लॉस के अंदर है, राइट? यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द बिजनेसेस दैट आर शोइंग अ गेन एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर नेट एसेट वैल्यू, दैट इज योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, राइट? बिकॉज 10 to 15% ड्रॉडाउन अगर किसी का पोर्टफोलियो लेवल पे हुआ हो तो उसमें क्या होगा कि कुछ स्टॉक्स में ड्रॉडाउन 5% होगा, कुछ स्टॉक्स में ड्रॉडाउन 30% होगा, राइट? एंड यहीं पे हम लोग गेम से बाहर हो जाते हैं.
बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि एज एन एक्टिव इन्वेस्टर people focus a lot on stock specific thing versus what your portfolio is doing on an overall level. But when you take a disproportionate allocation in a weak market in a stock that is going through near term to medium term headwinds, right? ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो नियर टर्म हेडविंड से नहीं जा रहा, बट मीडियम टर्म हेडविंड्स के थ्रू भी अगर कोई स्टॉक जा रहा है एंड यू हैव 30% एलोकेशन टू इट, तो देयर आर कपल ऑफ रूल्स विच यू कैन फॉलो. तो जेनेरिक रूल्स है, अगेन अंकित ये आपके लिए स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, अगेन दीज आर जेनेरिक रूल्स. सो वन ऑफ द रूल्स इज when in doubt sell half. A very simple rule. When in doubt sell half. This is a very simple rule that anyone can follow. कि कभी बहुत डाउट हो रहा है तो सेल हाफ, राइट, कि नहीं समझ आ रहा है बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है. सेकंड क्या है कि सी योर प्रॉफिट एंड लॉस डजंट मैटर. सी योर प्रॉफिट एंड लॉस डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स is that whether you are right on the business or wrong on the business over 2-3 years. If you think 2-3 years headwinds persist करेंगी तो PNL मैटर नहीं करता. अगेन दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि स्टॉक नहीं जानता कि आप उसको ओन करते हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस इररेलेवेंट है एक स्टॉक के लिए, राइट. सो अगेन योर क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम, आई एम अज्यूमिंग कि आप थोड़ा सा लाइक न्यू टू इन्वेस्टिंग है, तो यहाँ पे आपका पीएनएल मैटर सिनेरियो में नहीं करेगा. आपको क्या सोचना है कि वेदर कि मैं बिजनेस में राइट हूं या रॉन्ग हूं, because investing will have these hits. And also remember, survive guys, survive, learn to survive. What is this type of basically weightage? Agar मैं new investor हूँ, I won't go and put 30 to 60% of my capital in one stock. I'll at least have 20 to 25 businesses, because especially in a bear market, why do you want to take a risk of having large allocation in a stock and there could be a drawdown, so you're drawing down your entire net worth. So don't take such type of risk. At least diversify against your ignorance, right? Because after the stock falls, then people start looking at the profit and loss statement. That's not the correct way to look at things. You have to be thinking whether you're right or wrong on the business. अगर आप रॉन्ग ऑन द बिजनेस हो गए, जैसे आई थिंक इस बिजनेस को आपको इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा, जैसे शायद से यहाँ पे मीडियम टर्म हेडविंड्स है, तो आपको इंडिपेंडेंटली इस चीज की कॉल लेनी पड़ेगी, राइट. बट दीज आर सम ऑफ द वेज दैट यू कैन बेसिकली डील विद इट. एंड या, तो ये तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था. आई थिंक आई withheld the name of the business because it's one of the recent demerged course in a retail sector. But yes, it's challenging if you don't have that type of bandwidth to read the business carefully. Then Intak Shub tricky name. Intak Hussain Deva Kedia has a question on defense ETFs. See, I think I hold this long term view कि all these defense ETF हो गया, capital markets ETF हो गए, these are launched on cyclical peaks because that is where a lot of retail investors get attracted. I still hold the same view. I think defense की जो budget में allocation है उसमें growth 7% है year on year, and yes, there are a lot of projects there, but a lot of good defense companies are at 100 to 120 P. One of them is in a drone manufacturing sector, राइट. वहाँ पे अभी तक ऑर्डर नहीं आया. मैनेजमेंट वो सेइंग कि Q3 में ऑर्डर्स आई जाएंगे, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आए. मैनेजमेंट्स हैव बीन आई थिंक गाइडिंग बेसिकली टू, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव गाइडेंस दे रही है मैनेजमेंट्स. सो आई थिंक एज अ सेक्टर, सी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना डिफरेंट बात है, बट एज अ सेक्टर स्पेसिफिक पर्सनली मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है. पर मेरे लिए ये मतलब इस टाइम पे डिफेंस और कैपिटल मार्केट्स सेक्टर्स is something which is a bit tricky, or you need to have a bit longer time horizon in such scenarios, right? Then Shalija has a question. When you look at stocks in money control like HDFC Life, its P ratio is 78 versus industry of 20. Then why does money control say that the P is low? इसका बड़ा एक सिंपल आंसर है यार. लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक में आप एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं. देखिए लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स को बड़ा ही एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ शलीजा आपके लिए, कि इन एम्बेडेड वैल्यू व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि एम्बेडेड वैल्यू इन लाइफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू बुक वैल्यू इन बैंक्स. तो बैंक्स को आप जैसे आप प्राइस टू बुक वैल्यू पे मेजर करते हैं, वैसे ही आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्राइस अपॉन एम्बेडेड वैल्यू पे करते हैं. एंड यहाँ पे जो आपका वैल्यू, जो आपके वीएनबी मार्जिन होते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू कि आप इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने कमा रहे हैं, राइट. थर्ड थिंग आपको क्या याद रखनी है, आरओईवी का क्या मतलब होता है, रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू विच इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर बैंक्स. तो बस यही 3-4 चीजें देखनी है, राइट. एंड साथ साथ आपको पॉलिसीज ट्रैक करनी है कि सरेंडर नॉर्म्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, फिर लाइक पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा है या नॉन पार्टिसिपेटिंग ज्यादा है. बट दैट इज अगेन मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बट लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर. अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू 18 to 20% पे ग्रो कर रही है, तो इट मीन्स कि उसकी बुक वैल्यू और नेटवर्थ 18 to 20% पे इवेंचुअली ग्रो कर रही है. एंड दूसरा मेट्रिक क्या है
कि VNB मार्जिन्स लास्ट 8 to 12 क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इस बार आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट ऑफ VNB मार्जिन्स हैज सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड, स्लोली हैज स्टार्टेड, पर VNB मार्जिन्स अब यहीं पे रहेंगे सेक्टर के। इससे ज्यादा अगर नीचे जाते हैं तो आई थिंक रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू सेक्टर की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू अभी 15 to 17% के बीच में, कुछ कुछ की 18 to 20% के बीच में भी है। So this is like a compounding setup. But banks में क्या प्रॉब्लम है? There are too many banks. इंश्योरेंस में क्या अच्छी चीज है कि लास्ट 13 ईयर्स में सिर्फ 2 ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस मिला है, और इंश्योरेंस सेल करने के लिए आपको एजेंसी नेटवर्क चाहिए और बैंक इंश्योरेंस नेटवर्क चाहिए, एंड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस आर गेनिंग मार्केट शेयर। तो HDFC लाइफ के केस में पी रेशियो इज द रॉन्ग मेट्रिक टू लुक एट इट। लॉन्ग टर्म प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, जो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। एंड आई थिंक अभी लॉन्ग टर्म प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू HDFC लाइफ का या SBI लाइफ का या ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का, आई थिंक इट्स ट्रेडिंग एट 5-year लो एट द मोमेंट। तो अगेन लार्ज कैप्स में वन हैज टू गो कॉन्ट्रा लॉट ऑफ टाइम्स, बट अगेन अगर ये 5-year लो पे ट्रेड कर रहा है तो आपको क्या देखना है कि न्यू प्रीमियम ग्रोथ कितनी आती है, बिकॉज न्यू प्रीमियम ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू योर AUM ग्रोथ इन इंश्योरेंस। तो जैन मंथ में जैसे HDFC लाइफ में 25% न्यू प्रीमियम ग्रोथ आई है, तो आपको ये न्यू प्रीमियम ग्रोथ का जो मल्टी नंबर है इसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो अगेन मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। न्यू प्रीमियम ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू AUM ग्रोथ इन इंश्योरेंस कंपनीज लाइक बैंक्स। Embedded value growth is book value growth. VNB margins is like your incremental operating margins या NIMs in banks, and return on embedded value is equal to return on equity in life insurance companies, which is equivalent to banks. तो अगेन अगर 18-20% एम्बेडेड वैल्यू टाइप कंपाउंडिंग इस सेक्टर में होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं आंसर कर रहा, बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पी रेशियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में देखना इज अ फ्यूटाइल टॉपिक। होपफुली दिस क्लैरिफाइज इट। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विवेक बिनवाल। सो क्वेश्चन है विवेक जी का कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, नेमली अर्निंग्स एंड इमोशंस ऑफ पीपल हु देन डिसाइड वेदर टू बाय और सेल अ स्टॉक। If stock is falling but earnings is coming better, then after what time will it follow its earning curve? Thank you, sir. So again, Vivek ji, there are number of issues which impact the emotions of the stocks, and also sometimes there are technical overhangs on stock. For example, a company could report blockbuster earnings, right? But what can happen is that there is an overhang of supply. Overhang of supply क्या है कि there are large shareholders who want to sell because it's an institutionally owned business. So scenario में क्या आएगा? इवन तो ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स आते रहेंगी, बट थोड़े टाइम के लिए स्टॉक पे प्रेशर रहेगा, एंड इवेंचुअली शेयर होल्डर्स हु आर बेसिकली बेटर माइट कम टू बेसिकली रिप्लेस द ओल्डर शेयर होल्डर्स। तो सी इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इज लाइक अ वेइंग मशीन, बट एक कॉम्बिनेशन होता है कि शॉर्ट टर्म में भी जब वोटिंग और वेइंग मशीन इकट्ठे मिल जाए तो दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू बी इन। बट इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड दैट एवरी टाइम कि वेर यू विल फाइंड अ वेइंग एंड वोटिंग मशीन बेसिकली concept in the short term as well. So it's very difficult to find that each and every time. So what you have to remember is that you as a fundamental or a business analyst have to focus on earnings. जहां पे आपको दिख रहा है कि एंड आपको साथ साथ वैल्यूएशन पे भी फोकस करना है, अगर वैल्यूएशन ओवर द टॉप नहीं है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है जैसे अभी केन्स टेक्नोलॉजी में हुआ, तो केन्स का वैल्यूएशन 180 पी था और अर्निंग्स क्योंकि 30% ग्रोथ आई, तो स्टॉक हैज नियरली हाफ्ड। आई थिंक 8,000 के पीक से स्टॉक अब 4100 पे आ गया। तो आपको क्या याद रखना है उस केस में कि वहां पे इमोशंस भी अगेंस्ट हो गए और अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी भी स्लो हो गई, क्योंकि अर्निंग्स पहले 100-120% पे ग्रो कर रही थी, अब 30% पे ग्रो करी। तो इस सिनेरियो में दोनों ही चीजें उल्टी पड़ गई। बट अगर आपकी पार्ट ए सही है और आपका पार्ट बी वैल्यूएशन ठीक है, तो पार्ट सी इवेंचुअली कम्स। पर कई सिनेरियोज होते हैं जहां पे दो तीनों चीजें सही हो जाती है, तो दोज टाइप ऑफ सेटअप्स आर फार एंड फ्यू इन बिटवीन। दोज टाइप ऑफ सेटअप्स आर द सेटअप्स आइडली वन शुड हंट फॉर। मैं कभी कभी अगर स्टॉक नहीं चलता है इन स्पाइट ऑफ ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स, तो आपको पहले जाके देखना है कि एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स की बीट हुई है या नहीं हुई। अगर एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है, देन मे बी गिविंग इट सम मोर टाइम इज इंपॉर्टेंट। देन अनदर कॉन्सेप्ट इज कि अगर 3-4 क्वार्टर अच्छी अर्निंग्स आने के बाद भी इमोशंस ऑफ द पीपल एंड अगर वैल्यूएशन चीप भी है फिर भी अगर इंपैक्टेड रहते हैं, देन यू कैन यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टॉप लॉस। बिकॉज जनरली जैसे मैं थीसिस बेस्ड इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं टाइम स्टॉप लॉस रखूंगा अगर इवन दो मेरी पूरी थीसिस प्ले आउट कर रही है 4 to 6 क्वार्टर्स के बीच में, आई विल कीप अ टाइम स्टॉप लॉस इन एनी टाइम ऑफ, और हो सकता है 6 to 8 क्वार्टर्स भी हो जाए डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। एंड इफ आई सी की द बिजनेस इज गेटिंग स्टिल पनिश्ड एंड इट्स नॉट गेटिंग रिस्पेक्टेड, so that's a time stop loss that one can use independently. So that is how you look at the stock price movements, right? And this is how you can deal with it. Then there were multiple questions. How to view businesses like Ami Organics and other CDMOs when growth inflects? See, you have to be very molecule specific when it comes to looking at CDMO companies.
वाई सो बिकॉज या तो आप बास्केट अप्रोच ले सकते हैं। देखिए ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ना बताना मुश्किल है कि कब कौन सा मॉलिक्यूल कमर्शलाइज होएगा। इनोवेटर्स जो होते हैं उनको भी नहीं पता कि कौन सा मॉलिक्यूल कब कमर्शलाइज होने वाला है। तो आप इस सेक्टर में क्या कर सकते हैं, एक बास्केट स्पेसिफिक अप्रोच भी ले सकते हैं, जिसमें आप 4-5 सीडीएमओस डाल लीजिए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज वन कैन डू, बिकॉज आउटकम्स आर वेरी रैंडम। कभी एक क्वार्टर में 100% ग्रोथ आ जाएगी, फिर अगले क्वार्टर में -20% ग्रोथ आएगी, राइट। तो मॉलिक्यूल स्पेसिफिक इंसाइट लीजिए। यहाँ अगर नहीं आ रही मॉलिक्यूल स्पेसिफिक इंसाइट, देन हैव अ बास्केट स्पेसिफिक अप्रोच। जैसे अमी ऑर्गेनिक्स के केस में आई थिंक अपिक्साबान करके एक मॉलिक्यूल है विच इज अ ड्रग फॉर ट्रीटिंग प्रोस्टेट कैंसर विच इज डूइंग वेल। एंड मैनेजमेंट ने शायद से बोला कि 90 करोड़ की सेल 1000 करोड़ हो जाएगी सीडीएमओ की ओवर नेक्स्ट 4 years। एंड ओवरऑल बिजनेस की शायद से 2000 करोड़ की सेल हो सकती है। एंड आपको देखना है कि अगर एक अच्छा सीडीएमओ 25 to 30% ईबिटा मार्जिन कमाता है, तो इस सिनेरियो में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, और फिर आपको वहां पे बुल बेयर और बेस सिनेरियो खुद बना के देखना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ यू कैन व्यू। हमने इस बिजनेस पे हमने एक वीडियो भी बनाई थी आज से 1 year पहले, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस वर्क्स, राइट। बट दैट इज हाउ यू कैन लुक एट सच कंपनीज एंड व्हेन द ग्रोथ रेट्स इन्फ्लेक्ट। तो सीडीएमओस पे आपको ऐसे ही देखना है। स्टॉक स्पेसिफिक आई कांट गिव अ बाय और सेल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू फ्रेमवर्क ऑन एनालाइजिंग दिस सेक्टर, कि जब आपके मॉलिक्यूल्स कमर्शियल होते हैं तो उनका मार्जिन इन्फ्लेक्ट कर जाता है, एंड दैट मार्जिन इन्फ्लेक्शन कैन लास्ट फॉर अ कपल ऑफ क्वार्टर्स एज वेल, कुड लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज वेल। Another very interesting question जो generally आया is a question कि how to read and research companies where how to read and research companies where basically your no public information is available. तो यहाँ पे I just want to show you a live example, right? So I'll just show you a live example over here. So just a second, just a minute. I'll just show you a couple of live examples here. तो यहाँ पे हम आते हैं, तो जैसे एक कंपनी है, जैसे बैंको प्रोडक्ट्स करके कंपनी है। एंड यहाँ पे आई थिंक अभी रिसेंटली वैल्यू पिकल थ्रेड भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बट यहाँ पे कोई कॉन कॉल्स नहीं होती। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट है जिसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड क्रेडिट रेटिंग है जो टाइम टू टाइम आती है, वंस अ ईयर, राइट टाइप्स। बट अभी कंपनी के कल अर्निंग्स आई, एंड कंपनी की अर्निंग्स में हमने देखा कि मार्जिन हैव गॉन डाउन फ्रॉम 16% to 9%। 68 करोड़ का पैट 31 करोड़ रह गए। तो लेट मी आस्क यू सिनेरियो कि इस सिनेरियो में सपोज इफ एनीवन वाज हाइपोथेटिकली इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड यू सी सच डीग्रोथ इन अर्निंग्स एंड यू डोंट इवन हैव अ कॉन कॉल कमिंग अप, व्हाट इज योर रिएक्शन? व्हाट विल जनरली बी योर रिएक्शन इन द कमेंट्स? आपको क्या लगता है? What will be generally your reaction in such a scenario, right? Because there is no information available, right? So again, that is something that you must remember, is that key in companies with lack of information, yeah, you will panic, but अभी कोई कह रहा है कि basically get out, but just imagine कि now in a market where even companies with good information fall 10-20% on a slight bad results or average results, right? So I don't know what happens, मतलब I'm just showing you one of the case studies। तो जहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ पे या तो पोजीशन साइजिंग कम रखिए, या तो बी अ बिट मोर केयरफुल ओवर देयर। जैसे एक और कंपनी पिक्स ट्रांसमिशन, ओवर हियर इज आल्सो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, right? For like 8, 10, 12 quarters there was no growth, then all of a sudden last quarter growth आ गई, right now। रिजल्ट्स 14 फेब को आ रहे हैं, कोई कॉन कॉल वन कॉल नहीं हुई। आपको कैसे पता कि बेसिकली कि व्हाट्स द गाइडेंस, हाउ द रिजल्ट्स विल बी? इफ अगेन द रिजल्ट्स आर बैड, देयर इज नो कॉन्फ्रेंस कॉल एंड स्टफ, and these days in a bear market stocks fall 15-20% on a single day। so that's the problem of investing in companies with a lack of public information। Yes, you can do research by looking at export data, credit rating, by speaking to competitors, by speaking to peers, but as a retail investor, my general framework is avoid companies where you think there is a lack of information, because there is no edge to be had over there until unless you can go to the AGMs and get an idea, or you can attend management calls जो कभी कभी होती हैं, right? But as a retail investor, until unless you are able to do that, it's just my view कि या तो position sizing कम रखिए, या तो generally you should end up basically ऐसे setups को आप avoid भी कर सकते हैं। It's something that you should do independently, right? Awesome. So are you enjoying this session? Because we are doing this Q&A. So I think we'll do more of these Q&As also going forward. If you are, just smash the like button, and also let us know in the comments ki these are the type of sessions which can add more value to your investing journey and SYC membership as well. Right. Awesome. Awesome.
So let's go forward and let's go to the next question. So again ये multiple questions आए थे next वाला भी. This is कि how to find order book of any stock. This is a question asked by Learning Finance. So Learning Finance, I think a simple answer to this question is कि look for the investor PPT, look at the presentation of that particular company and there you can find the order book. I think आपका question ऐसे TD Power के लिए था, but आप यहाँ पे simply आएंगे, आप इनकी PPT खोलेंगे, you can just click on the PPT. पीपीटी पे जाके आप देखेंगे आपको यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक दिख जाएगी, तो आपको नीचे आप जाएंगे तो आपको नीचे जाके इनकी ऑर्डर बुक दिख जाएगी एंड ऑर्डर बुक दैट यू विल सी इज जस्ट ओवर हियर. तो यहाँ पे आपको इनका ऑर्डर बुक और ऑर्डर इनफ्लो दिखेगा. जैसे 9 मंथ की ऑर्डर बुक 1064 करोड़ की है, राइट. एंड अगर आप यहाँ देखते हैं दिस इज अ 9 मंथ ऑर्डर फ्लो एंड अगर आप इस क्वार्टर की देखते हैं तो 52% ग्रो करेगी. So that is how you can find the order book growth of companies. So कोई भी कंपनी हो आप उसकी पीपीटी में जाके ऑर्डर बुक देख सकते हैं. जैसे अभी एक एनसीसी का एग्जांपल लेते हैं, तो एनसीसी का स्टॉक प्राइस हैज फॉलन अ लॉट इन द लास्ट 3 to 6 months. नाउ व्हाई सो? बिकॉज ए दे हैव रिड्यूस्ड देयर गाइडेंस एंड बी ऑर्डर बुक इनटेक भी इनका रिड्यूस हुआ है. तो आप पीपीटी में जाके आप इनका चेक कर सकते हैं. सिंपली यू कैन फाइंड द ऑर्डर बुक नंबर ओवर देयर. सो दिस इज हाउ यू कैन लुक फॉर ऑर्डर बुक ऑफ डिफरेंट कंपनीज. होपफुली दैट इज एक्सट्रीमली क्लियर, राइट. और ऑल्टरनेटिव वे क्या है, चैट जीपीटी पे भी जाके पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल्सो वे, बट बेटर टू लुक एट कंपनीज एग्जैक्ट रिसोर्स इटसेल्फ. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द ऑर्डर बुक ऑफ डिफरेंट कंपनीज. कनिष्क का क्वेश्चन है. So Kanishk has a question. According to technicals level, a hotel stock has given a breakdown by closing, etc., etc. But according to qualitative analysis, Q3 is good for luxury hotels and it is normal for business purpose hotel. So in this, how can one build perception on the stock, or what should be the perception in this kind of stock? So I think first technical ka price wala question I'll end up ignoring because of the SEBI regulations and stuff. But I can answer the second one, qualitative question. कि Q3 is good for luxury hotels and normal for business purpose hotels. तो सी बिजनेस होटल्स का Q4 इज द बेस्ट क्वार्टर बिकॉज यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, राइट. सो यू हैव टू सी कि वेदर द ग्रोथ रेट्स जो इस क्वार्टर के अंदर 10% की सेल्स ग्रोथ थी, वेदर इट कैन रिवर्ट बैक टू 12 to 15% और नॉट. सो दैट इज वन ऑफ द की ट्रैकिंग क्राइटेरियाज. एंड परसेप्शन बिल्ड करने के लिए देखिए स्टॉक्स के अंदर ना चर्न होता है बार बार. चर्न क्या होता है? चर्न इज बेसिकली कि देर आर ओल्ड इन्वेस्टर्स प्री आईपीओ, देर आर न्यू इन्वेस्टर्स हु कम पोस्ट आईपीओ. And pre-IPO wale investors generally they keep selling the stock because they've been in the stock for last 5, 6, 7 years, right? So that leads to churn in the stocks. As a fundamental analyst, you can track the earnings growth. You can track whether it is meeting or beating the expectation or not. As a fundamental analyst, that is something that you can track. Secondly, as a technical analyst, what you can do, you can club the two. And when you see there is a support that has been formed and now it is moving above its 30 weekly exponential moving average, then it becomes another signal yes, it might become actionable, right. But now again another way is when in doubt, say sell half is also one of the ways. You can also use a time stop loss in such a scenario. But see, if your process is good, outcomes could be good or bad depending upon the luck factor as well. But at the end, your process has to be good, right. But generally you can place these businesses with your position sizing framework. तो आप पोजिशन साइजिंग ऐसे बिजनेसेस में कर सकते हैं जहाँ पे some of the large shareholders are there who are basically selling in spite of good results or excellent results, because results were generally good only. I think they're also in line to sort of basically deliver on their guidance. But that is how you should think about the stuff, right? So this is with this business. But I can't answer a question on technicals or like prices or buy or sell. But I can just give you a framework कि आप कैसे framework use कर सकते हैं. कि either be patient, be a bit more long term. Look at when they are they delivering or are they delivering what they're saying. That is one approach. Second approach is use multiple frameworks that you have. When in doubt, sell half. That is a framework to use. Have a time stop loss in place, right? And use other technicals to see when the stock is gaining strength. So that is also one of the frameworks that you can use, right? There won't be any definitive answer because business itself seems to be doing well. So again, business आपको development track करना है. Just a second, yeah. Now, Saundarya has a question कि during an uncertain market conditions like one we have seen since मैं कहूँगा September 2024 से, I have heard you and other experienced tribe members discuss profit booking in stocks, especially overvalued ones, as a way to ride the market. Can you please share how we can approach profit booking with 1 or 2 case studies, especially as a new investor? Now, again, say suppose
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई यूज टू बी इन्वेस्टेड इन अ फूड डिलीवरी स्टॉक एग्जाम्पल. I'm not naming the stock to avoid any issues. Used to be invested in a food delivery stock, and that stock reasonably did well. Uh, Again, avoiding any percentage or any all these things. But when I did the valuations of that particular business, I thought कि 3 years down the line, it's still at 50 to 60 PE. तो अगर आपका कोई भी स्टॉक थ्री, दिस इज अ फ्रेमवर्क यू कैन बोरो, 3 years डाउन द लाइन एज पर ब्रोकरेज एस्टिमेट्स और एज पर योर एस्टिमेट्स इज एट अ पी मल्टीपल ऑफ मोर देन, आई थिंक मैक्स मोर देन 25 टाइम्स. राइट, अगर आपको कोई भी स्टॉक 3 years डाउन लाइन इज एट अ पी मल्टीपल ऑफ मोर देन 25 टाइम्स, that should at least give you a hint कि maybe now it's time to at least partially sell, or maybe it's time to get out, right? Because see, this valuation discipline will help you to do partly do profit booking, and over a period of time you can also use this framework to sort of look at bull and bear markets, because see, in bull markets across the universe you'll see such type of setups, and आपको लगेगा कि यार मैं ही बेवकूफ हूँ जो ये 200 की बी का स्टॉक नहीं ले रहा, और किसी ने स्टॉक लेके उसमें 60% रिटर्न कमा लिया है, और अब उसने बेच भी दिया, उसने फिर खरीद लिया, फिर उसने बेच दिया, फिर भी खरीद लिया. दैट आई डोंट नो if that is the truth or not, but generally it's a framework that you can use, right? Because प्रॉब्लम क्या होती है कि वैल्यूएशन स्टार्ट्स मैटरिंग अंटिल इट डजंट मैटर, एंड जैसे ही एक क्वार्टर खराब होता है, देन देयर इज अ होर्ड ऑफ पीपल लुकिंग टू एग्जिट. अर्ली मॉर्निंग लोग बैठे होंगे, स्क्रीन को देख रहे होंगे एग्जिट करने के लिए, कई लोग प्री मार्केट ऑर्डर डाल देंगे. बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो. देखिए, आपके पोर्टफोलियो में एक दो स्टॉक्स में तो होने ही वाला है जब मार्केट स्ट्रक्चर वीक होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मेरे को, राइट, कि एक दो स्टॉक्स में तो होने ही वाला है ऐसा. But if you think कि generally if the stock that you own looks expensive 3 years down the line, so that is a signal to trim or sell, right? Then going forward to Rupam Sarkar's question, as the government has reduced sovereign gold bond issuance, I think इस बार तो issue ही नहीं करे, बंद ही कर दिए. Digital gold attracts a lot of charges while selling and buying. What is the best instrument to invest in gold? I think gold B's probably is the best instrument that you can use to invest in gold. अगर आपको इन्वेस्ट करना है डिजिटली, फिजिकल गोल्ड भी आप कॉइन्स ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से. तो दीज आर टू वेज दैट यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड. बट अगेन, फिजिकल गोल्ड का स्टोरेज आप कैसे करेंगे, आप कितना नहीं करेंगे, दैट बिकम्स एन इशू. बट दीज आर टू वेज विच आर सम ऑफ द बेस्ट वेज सूटेड टू बाय गोल्ड. आई थिंक एक और भी शायद से वे था जिसमें आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं, तो आपके लिए वहाँ पे फिजिकल गोल्ड लेके रख लिया जाएगा. बट आई थिंक डैट उसी की आप बात करें कि चार्जेस बहुत हैं बाइंग और सेलिंग में. तो आई थिंक गोल्ड बीज, देर आर गोल्ड ETFs ऑल्सो, एंड सेकेंड वन इज योर बेसिकली जो आपका फिजिकल गोल्ड होता है इन गोल्ड कॉइन्स एंड स्टफ. So these are some of the other lower cost basically methods available. जनरली आपको एक बारी एक्सपेंस रेशियोज बैठ के देखना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड बीज में हो सकता है कि लिक्विडिटी चार्जेस हो, बट आपको चीज एक बारी मतलब लिक्विडिटी इम्पैक्ट या इम्पैक्ट कॉस्ट हो. बट आई थिंक गोल्ड बीज जनरली हैज डन वेल और ट्रैक द अंडरलाइंग प्राइस ऑफ द गोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आई थिंक यहाँ पे गोल्ड बीज हम खोल के देख भी सकते हैं, राइट? जस्ट सेकेंड, राइट. So just over here, I'll just share the screen. So this is again Nippon India ETF for gold bees. So this is one of the funds that you can check, right? So आप इस वाले को check कर सकते हैं. So we can just check it on money control, right? So this is an ETF that is available. So this is there. So it's one of the low cost basically methods to sort of track the underlying earnings of gold or underlying price appreciation of gold. Earnings तो होती नहीं gold में, price appreciation ही होती है. So underlying price appreciation of gold. So you will have to see and check कि इसमें tracking error कितना है, right? So this is the ETF, Nippon India ETF. I think इनका website में मतलब problem है कुछ, right? So this one, I think, yeah, the gold ETF, right? I think 10 years से is like last 5 years से since 2021, the gold ETF itself has delivered decent returns, I think, like over the last couple of years. But I think gold as an asset class has delivered decent results, right? Now just going back to the Q&A. So that is one of the ways that you can use to invest in gold. Utsav has a question. When I saw the video on VStop, so again, VStop is an indicator that we used to buy or sell, looked easy to implement. Actual implementation was a nightmare because कोई stock 10-20% गिर गए. My question is, when should we ignore VStop indicator? See, in a broad market correction, पहली चीज तो देखिए, there are 3 ways that you can use VStop in a better way. पहला क्या है कि VStop को लगाइए इंडेक्स पे. इंडेक्स पे लगा के VStop को देख सकते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो निफ्टी स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप इंडेक्स हो, राइट? सो जस्ट एग्जांपल, अगर निफ्टी, अगर इन तीनों का VStop नेगेटिव हो रहा है, राइट,
So again, if you do that type of investing, asset allocation और अपने आप को मतलब investing को basically balancing between large mid cap and small caps, so it's a signal कि you should start, अगर जैसे दोनों इंडेक्स का वी स्टॉप नेगेटिव हो गया था सितंबर में, so it's a signal कि मार्केट स्ट्रक्चर इज ब्रोकन बिकॉज अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी आपके हायर हाइज बनने बंद हो गए थे एंड आपके लोअर हाइज बन रहे थे, जो नेक्स्ट हाई था इट वाज लोअर देन द प्रीवियस हाई, राइट? तो मार्केट ट्रेंड गेट्स ब्रोकन, राइट? तो फर्स्ट वे टू यूज वी स्टॉप इज टू लुक एट द इंडेक्स लेवल एंड देन टेक अ स्टॉक स्पेसिफिक कॉल कि मे बी आई शुड रिड्यूस और डू सम पार्टली आई शुड डू सम प्रॉफिट बुकिंग इन सम ऑफ द नेम्स दैट आई हैव. So that is one way to use VStop. Second way to use VStop is कि अगर आपको लगता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रोकन है तो यू कैन गो टू वीकली टाइम होराइजन, एंड वीकली टाइम होराइजन में इफ यू होल्ड एन ओवर वैल्यूड स्टॉक और स्टॉक वेयर यू थिंक कि यहाँ पे यू डोंट हैव दैट टाइप ऑफ कन्विक्शन टू यूज वीकली वी स्टॉप ओवर देयर, कि नो मैटर इट्स अ 10-20% ड्रॉप इन अ वीकली वी स्टॉप देन यू हैव टू बेसिकली गेट आउट. सो आपका जो क्वेश्चन है आई अंडरस्टैंड इट फ्रॉम वेयर इट कम्स कि 10-20% जो ड्रॉप्स होते हैं स्टॉक में, it is something that will 100% spook you because no one likes to see a 10-20% cut in the stock, right? But again, just imagine ki best of the investors and traders in the world are good at what? Can anyone tell me ki best of the investors and traders in the world are good at what? The answer is risk management. The answer is risk management, right? So a 10-20% loss is also there because it helps you to do risk management, because a 10-20% loss can turn into 50-80% loss also, right? We have seen ki some of the past bull market winners have not made a comeback in this particular bull market. Chemical stocks आप देख सकते हैं, they fell 30% first and then they fell 50% from there. Aarti Industries is a good example of that. Balaji Amines is a good example of that. Alkyl Amines is a good example of that. Fine Organics is a good example of that. So again, risk management is something that you must follow because risk management will give you liquidity to get into other winners which might emerge, right? Third is V-stop indicator आप कभी ignore कर सकते हैं. When you have done business analysis, so you should track the business developments, and if you think the valuations are cheap enough, then in that scenario you can ignore the V-stop indicator, because generally what will happen in a broad market drawdown, almost everything will have a negative V-stop, right? So that is the only way to survive these drawdown is to track the business very very carefully. राइट? सो दीज आर थ्री वेज. बट नेक्स्ट टाइम अगर इंडेक्स पे आपको दिखता है कि वी स्टॉप नेगेटिव हो रहा है, सो दैट कुड बी अ साइन टू टेक सम कैश कॉल, एसेट एलोकेशन, कि आपके पास गोल्ड एसेट ज्यादा हो, या आपके पास यहाँ पे आपके पास दूसरे टाइप का फंड्स है विच मिक्स डेट एंड इक्विटी. सो दैट इज एन एसेट एलोकेशन कॉल दैट यू कैन टेक, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द वेज दैट यू कैन बेसिकली ऑल्सो डील विद इट. Anant has a question. So I think, or हमारे पास 10 और questions है अभी. So I'll just, before just going forward, so just from the audience, are you enjoying the session? Like, should we do more of these basically live Q&A? Just a second. Right. So should we do more of these live Q&A? Hopefully there's some insight that you derive from this. Awesome. Awesome. So just going forward and looking at more questions. Yeah. So Anant has a question on a stock. So I think I won't be able to answer on the future direction. I can just answer on what the business is doing. So inka question Welspun Enterprises pe, right? So the question is ki while everything looks in the right direction, a dampener in Q3 was doubling of other expenses. Wanted to understand why this could have happened, whether this is one time or recurring in nature. So I think Anant, to answer your question better, so Q3 of FY24 में अगर आप जाके results देखेंगे Welspun के, तो यू विल चेक कि Q3 ऑफ FY24 में देयर वाज अ वन ऑफ आर्बिट्रेशन सेटलमेंट इनकम फ्रॉम NHAI व्हिच एडेड 10 to 20 करोड़ टू देयर EBITDA, एंड ऑल्सो इस वजह से वहां पे मार्जिन आपको 18% के आसपास दिखेगा. तो इस सिनेरियो में मैं आपको rather than giving you a concrete answer, there are hints that I can give you. इस कंपनी की आप जाके फुल ईयर की गाइडेंस देखिए. आई थिंक आपको फुल ईयर की गाइडेंस का नंबर मिल जाएगा, एंड देन चेक कि मार्जिन का गाइडेंस क्या फुल ईयर का, राइट? एंड देन फुल ईयर की गाइडेंस में से फर्स्ट 9 मंथ्स के जो नंबर है उनको माइनस कर दीजिए. जैसे अगर FY25 की फुल ईयर की गाइडेंस है उसमें से फर्स्ट 9 मंथ्स के नंबर्स को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास Q4 FY25 के नंबर्स की गाइडेंस आ जाएगी, विच विल गिव यू एन आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स दिस बिजनेस कुड पोटेंशियली डिलीवर. एंड इन्होंने मीडियम टर्म गाइडेंस भी कॉन्फ्रेंस कॉल में दी थी. सो दैट इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन डू. Another thing to realize is that in some businesses, looking at yearly results might give you a better picture. Yearly results might give you a better picture versus quarterly results. Same example, real estate. अब रियल एस्टेट के अंदर देखिए किसी क्वार्टर में कंपनी के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, किसी क्वार्टर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होते, बट फुल ईयर रिजल्ट्स देखना ज्यादा जरूरी है, एंड समटाइम्स प्रोजेक्ट लॉन्चेस आर आल्सो डिलेड. So how to judge on a quarterly basis is something that you must understand कि it's not very easy कि every quarter there will be a project launch.
Same case with these type of companies, because revenue booking as and when happens when a project is completed or percentage of that project is completed. So it becomes very very difficult to very very difficult to time the quarters, right? आप हर कंपनी में जाके क्वार्टरली टाइमिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में अगर 20-25 कंपनीज हैं तो कभी ना कभी 6-7 कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, 6-7 कंपनीज के ओके ओके रिजल्ट्स आएंगे, 3-4 कंपनीज के खराब भी रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा होना बहुत ही रियलिस्टिकली पॉसिबल है। बट व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट कि फुल ईयर रिजल्ट्स या मीडियम टर्म रिजल्ट्स आपको किस डायरेक्शन में लगते हैं जाते हो इस कंपनी के। तो अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे, आई थिंक आपको उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल से आंसर मिल जाएगा। तो देन यूल बी इन अ then you'll be in a basically better position to understand this। एंड जैसे आपने ये Q4 का नंबर लिखा है इसका, तो लास्ट Q4 से जाके कंपेयर कीजिए कि ये लास्ट Q4 में नंबर कितना था। दैट शुड गिव यू एन आंसर कि व्हाट द कंपनी इज लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ ईयर टू ईयर ग्रोथ। जैसे आपने Q4 ईबिटा लिखा 150 करोड़ का, तो लास्ट Q4 में ईबिटा का नंबर क्या था। दैट विल गिव यू एन आंसर ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस, राइट। नाउ गोइंग टू Rajshri Dhar's question, what's your view on the narrative that capital flow away from power to consumption due to tax cuts and no incremental capex happening? Also, is there any impact on evolution of DeepSeek, which it requires less data and hence lesser need for data centers, hence lesser consumption for power? So first, let's answer the second part of the question first. So let's just look at an interesting piece of data. So just over here, तो यहाँ पे आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे और येस्टरडे इटसेल्फ आई पोस्टेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्निपेट ऑन ट्विटर। सो जस्ट ओवर हियर, तो अगर आप ट्विटर पे आते हैं तो ट्विटर पे SOIC की जो आईडी है, यहाँ पे एक स्निपेट पोस्ट करा था कि जो लार्ज टेक कंपनीज हैं यूएस में, राइट, तो व्हाट आर देयर केपेक्स प्लान्स, एंड दिस इज आफ्टर दिस क्वार्टर्स रिजल्ट्स, राइट। ये क्वार्टर के रिजल्ट 30 जनवरी से आ रहे हैं, डीपसीक वीपसीक के बाद भी। केपेक्स बाय हाइपरस्केलर इज 320 बिलियन फॉर 2025, and this capex number was 240-250 billion in 2024, right? So capex yearly has grown by almost 30%, right? So again, it's too early to call from my side कि whether DeepSeek will have an impact or not, because apparently 30% of Nvidia की सेल सिंगापुर में होती थी, एंड सिंगापुर के पास खुद के पास तो इतना डेटा सेंटर वेंटर बिल्डिंग का वो नहीं है, तो सिंगापुर की सेल्स कहाँ जाएंगी? टू चाइना इवेंचुअली, राइट। So again, and also DeepSeek has been banned in US because they think they have stolen, like they have copied the model of ChatGPT and some of their codes from LLM also. So that is again we don't know because it's a black box of a country, right? And साथ again, Chinese places all over the world are banned to store their data. तो यहाँ पे भी आप डेटा नहीं स्टोर करने वाले, but we will get to know by looking at capex plans of hyperscalers because these companies are leading the race in this technology. तो Amazon का capex plan $100 billion हो गया, फेसबुक का आई थिंक $70-80 बिलियन है, माइक्रोसॉफ्ट का भी $70-80 बिलियन है, एंड गूगल का $60-65 बिलियन का केपेक्स प्लान है। सो ऑल देयर केपेक्स प्लान हैज इंक्रीज बाय 30-40% year on year. So they've been putting capital on the ground and looking at how the capex spending has been growing just over here is that ki now 50% of investment of S&P 500 in US is accounted by the Mag 7 companies of US. So we can't just say ki AI has died or this entire theme has died, because there are still things which will evolve. And also there is another view. It is something known as something by the name of Jevons paradox. Is that कि whenever a technology becomes lower cost in nature, then उसका adoption बढ़ जाता है। तो adoption बढ़ने से क्या होता है कि आपका at the end जो demand होता है, उसका use case होता है, वो और भी बढ़ जाता है। सेम एग्जाम्पल आप बहुत सारे बिजनेसेस या बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में ले सकते हैं, राइट। कि पहले आपके कोल इंजन से फिर कोल की जगह स्टीम इंजन आए, बट अगेन फिर क्या हुआ कि जो रेलवेज हैं दैट नहीं, पहले स्टीम इंजन से फिर कोल इंजन आए, फिर क्या हुआ कि जो रेलवेज का यूज केस है दैट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो instead of decreasing, it led to a widespread explosion in the demand, right? So that is also something that you might basically study about. It's very early to call it, right? So again, that is something that you have to see independently, because whatever I've read, so there are pros and cons and we still don't know, but one thing is for sure कि capital on the ground की investments are increasing by 30-40%, which will lead to higher power demand. तो कंजम्पशन एंड पावर की जो डिबेट है, सी देखिए, इंडिया स्टिल ओवर पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन अ पावर डेफिसिट कंट्री। तो कंजम्पशन अच्छी चीज़ क्या है इस गवर्नमेंट के बजट में, मैं आपको एक चीज़ बहुत एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी इकॉनमी के ड्राइवर्स होते हैं, एक तो एक्सपोर्ट ड्राइवर होता है जो इंडिया के लिए अभी इतना बड़ा ड्राइवर नहीं है,
सेकेंड ड्राइवर होता है कंजम्पशन, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड होता है आपके जो प्राइवेट कंपनीज केपेक्स करती हैं, और फोर्थ होता है गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट वाला जो ड्राइवर है वो फुल ऑन चल रहा है इस टाइम पे। 11.11 लाख करोड़ का केपेक्स है, इससे ज्यादा केपेक्स है ही नहीं गवर्नमेंट पास करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ 6 जगह स्पेंडिंग कर सकती है। या तो रोड्स पे कर सकती है, शिप बिल्डिंग पे कर सकती है, या तो स्पेंडिंग एविएशन पे कर सकती है, बिल्डिंग लाइक मतलब एयरपोर्ट्स एंड सब के लिए, या तो अर्बन हाउसिंग पे स्पेंडिंग कर सकती है, राइट। सो दीज आर 4-6, और या तो वाटर प्रोजेक्ट्स पे स्पेंडिंग हो सकती है। तो मेनली सिर्फ 4 to 6 एरियाज ही है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सकती है, विच इज ऑलरेडी रनिंग एट फुल थ्रस्ट। डिफेंस हो गया, ये सारी चीजें होगी। प्राइवेट केपेक्स कैन हैपन एट मोर प्लेसेस, कंजम्पशन कैन लीड टू मोर ग्रोथ। एक्सपोर्ट इंडिया में इसको अभी भूल जाइए, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन पे है। तो कंजम्पशन इंडिया में स्लो डाउन हो रही थी। तो जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं तो ईबिटा मार्जिन सारे कंपनीज के बढ़ रहे हैं, विच इज इंडिकेटिंग टू ऑपरेटिंग लेवरेज एंड यूटिलाइजेशन इंक्रीज, इवन दो सेल्स ग्रोथ सिर्फ 7-8% है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो क्या होएगा, इवेंचुअली प्राइवेट केपेक्स होएगा। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि वो 26 ईयर होएगा, 27 ईयर होएगा, या 28 ईयर होएगा, बट इवेंचुअली प्राइवेट सेक्टर केपेक्स might happen, right? And if private sector capex happens, so what will it lead to? Government already doing its entire role, consumption recovering because of tax cuts, and also because we are in such a stage of the economic cycle where अगर क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स की इंप्रूव होती है। अगर आप देखेंगे इस बारी आरबीआई गवर्नर की स्पीच सुनते हैं तो आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को हम रिलैक्स कर रहे हैं। तो बैंक्स को पहले जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो होती है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम था कि अगर आप 100 रुपीज का डिपॉजिट रखे हैं तो आप 110 रुपीज का भी लोन दे सकते थे। तो दैट इज द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। बट पुराने आरबीआई गवर्नर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, आपको 85% का ही आप दे सकते हैं लोन, राइट। तो व्हाट हैपेंड कि एचडीएफसी बैंक का जब मर्जर, एचडीएफसी बैंक बिकेम 10% ऑफ द एंटायर सिस्टम, 10 to 12%, एंड वहां पे 110% लिक्विडिटी कवरेज रेशियो था, जिसको ब्रिंग डाउन करके उनको 85 करना था। बट अब आरबीआई का गवर्नर क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा टाइम लेके कीजिए, 1-2 साल बाद भी कर सकते हैं। सो दैट विल लीड टू हायर क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ नहीं होती तो सब कुछ फेल हो जाता है, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन। फॉर अ डेवलपिंग नेशन 9 to 10% growth rates is not good for credit, right? It cannot be that case. So again, these are flawed macro sort of policies if you read about them in depth. So again, this credit growth number has to go anywhere between 12 to 15% for our normal GDP to grow at 11%. जब भी स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी हैज डन बैड इज व्हेन द क्रेडिट ग्रोथ रेट्स हैव फॉलन। चाहे आप आईएलएनएफएस क्राइसिस पढ़ लीजिए, डिमोनेटाइजेशन पढ़ लीजिए, 2011 to 2013 का टेपर टैंट्रम पढ़ लीजिए, 2008 ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिए। whenever broad banking system goes through a slowdown, your economy goes through a slowdown, because at the end credit leads to consumption, and consumption leads to income, and income leads again to consumption. That is how the economy is basically, that is how the economy works. So once इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है सेल्फ मेड है, इंडिया की प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल नहीं है आज। आर इकोनॉमी स्टिल ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, बट सेल्फ मेड प्रॉब्लम्स will take time to solve themselves out, because policy makers have also recognized them, right? So again, consumption eventually will do well, and that is how I am thinking about it as well. आजकल की डेट में तो अगर आप देखेंगे जो सेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हेल्थ केयर है, चाहे वो फार्मा हो या हॉस्पिटल हो, दैट इज बाय हैंड्स डाउन बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर एट द मोमेंट। एंड अगेन हेल्थ केयर भी कहीं ना कहीं मैंडेटरी कंजप्शन के अंदर आता है। आई थिंक स्टॉक मार्केट वाले तो शायद से ज्यादा ही खर्चा कर रहे होंगे फार्मास्यूटिकल पे आजकल, राइट। So again, that is also something to worth looking at. How to analyze and study textile sector? So देखिए टेक्सटाइल सेक्टर में I've done a video on textile sector 2 months back. तो अभी जो टेलविंड्स हैं वो गारमेंट्स वालों में, सोर्सिंग कंपनीज के अंदर है, राइट। एंड आपकी जो टेलविंड्स हैं होम टेक्सटाइल कंपनीज में, राइट। सो दिस इज अ सेक्टर विच डज वेल फॉर 4 to 6 quarters एंड देन बैड फॉर 4 to 6 quarters, बिकॉज इस सेक्टर में इन्वेंट्री स्टॉकिंग और डी स्टॉकिंग की साइकिल होती है। अभी इन्वेंट्री स्टॉकिंग अप की साइकिल हो रही है, जिसकी वजह से सम ऑफ दीज इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स आर डूइंग वेल एट द मोमेंट, स्पेशली जब हम एक्सपोर्ट डेटा देखते हैं। बट ये एक सिक्लिकल सेक्टर है जहाँ 4 से 6 क्वार्टर अच्छे होते हैं, बट डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड टेक्सटाइल कंपनीज में काफी अच्छे रिजल्ट्स बिजनेसेस के आ रहे हैं इस टाइम पे, राइट। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, जो आज से हमने 2 मंथ्स पहले डाली थी। उसमें बहुत केयरफुली हमने जय स्टडी करा कि टेक्सटाइल कंपनीज को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आई थिंक देर आर 4-5 more questions which I think I might just take one more, because we have a 2 p.m. webinar. Then we can do this another Q&A session next midweek में भी कर सकते हैं। तो जो SOIC स्टूडेंट्स हैं आपके लिए मैं फॉर्म फ्लोट कर दूंगा, तो जिससे आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, एंड वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस ओवर हियर।
Hopefully you're enjoying this session. Hopefully it adds value. If it does, do smash the like button. Hopefully आपको ये चीज़ अच्छे हो सकती है. नहीं ऐसो मैंने आपके लिए गूगल स्प्रेडशीट आपके लिए डाली थी. Whatever questions that you want to ask, you can ask them over there. SOIC research का subscription we've already opened because there were new norms which we were complying with. So you can just check. तो SOIC subscription आप SOIC research website पे जाके देख सकते हैं. Right. Just a second. Just a moment. This is it. All right. Now let's go forward to other type of questions. Yeah, this is the last question that I'll take. 3-4 more questions. I'll leave them for the next one because we have a webinar coming up, SYC Sunday League. So Ashwin Jain has a question. How long do capital cycles last? And once the bull market is over, in the next bull run, are sales higher than the previous bull run? Question is on wealth managers, right? So Ashwin, answer to your question is कि देखिए these capital market cycles, no one can tell for sure, but this is how it works. Generally past में ऐसा हुआ है 6 to 18 months of bull run, 6 to 18 months of bull run, followed by on an average जो bear market होती है, like on a lower end the bear market has lasted 6 months, on the upper end the bear markets have lasted for 18 months. पर 18 months वाली bear markets बहुत rare होती है. 2018 to 19 was one such bear market जो 18 months वाली थी. पर आप एवरेज लगा के चलिए 6 months to 12 months की बेयर मार्केट फेज होता है. सो वेल्थ मैनेजर्स का जब हमने हिस्ट्री स्टडी करा या हमने कैपिटल मार्केट कंपनीज का हिस्ट्री स्टडी करा, सपोज करते हैं आप बुल रन के पीक पे कैपिटल मार्केट वेल्थ मैनेजर लेके छोड़ देते 3 years के लिए, तो जनरली व्हाट हैज हैपेंड ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years, व्हेनेवर द नेक्स्ट बुल रन कम्स द प्रॉफिट्स डबल, द पैट डबल्स, राइट. बट इन द इंटरिम द प्रॉफिट वेल्थ मैनेजर्स में सस्टेन भी कर जाए तो बड़ी बात है. क्यों? वाई सो? बिकॉज क्या होता है कि वेल्थ मैनेजर्स दे कैन सेल इक्विटी प्रोडक्ट्स, दे कैन सेल डेट प्रोडक्ट्स, दे कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन और एन्युटी इनकम बहुत होती है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ खत्म हो जाती है. बट प्रॉफिट की जो डी ग्रोथ होती है वो कंटेन्ड होती है 5-10% में. वेराज ब्रोकर्स के अंदर प्रॉफिट डी ग्रोथ 30-40% हो जाती है. आप एंजल वन के रिजल्ट्स में जाके चीज देख सकते हैं. So wealth managers are generally a superior business model because assets are stickier in nature, right? So generally it's a superior business model, but you must have a 2-3 year horizon over there because these are businesses which will give you dividends. These are asset light companies. 30-40% ROE करते हैं अगर आप MTF facility हटा के देखते हैं. So it's very difficult to find such business models over 3-4 years, right? So have a longer horizon if you've invested in a wealth manager in a bull run, because इंटायर शैलो डाउन साइकिल विल कीप गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज. कि अगर आपका वैल्यूएशन सस्ता है 15-20 की पी पे आ जाता है, तो इट विल कीप गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज टू कीप बिल्डिंग योर पोजीशंस, राइट. सो अगेन आई कांट आंसर ऑन स्टॉक स्पेसिफिक, बट होपफुली आपको वेल्थ मैनेजर्स का इससे एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा. एंड दिस इज अ सेक्टर विच वील डू अ वीडियो ऑन मे बी नेक्स्ट 2-3 months, बिकॉज शैलो साइक्लिकल थ्रू फेज के जाएंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट माइट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, राइट. सो QIP का जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जावेद का भी, मीन रिवर्जन का, पवन का भी एक क्वेश्चन है, पीयूष का भी एक क्वेश्चन है. सो दीज क्वेश्चन आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट Q&A सेशन ऑफ फॉर SOIC स्टूडेंट्स. इफ यू वांट टू बिकम अ SOIC स्टूडेंट यू कैन बेसिकली आप SOIC मेंबरशिप के लिए आप SOIC मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन रजिस्टर फॉर इट. दिस इज अ कोर्स, एजुकेशन कोर्स है. यहाँ पे हम कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, टारगेट प्राइसेस नहीं दे सकते. दोज थिंग्स वी डोंट डू ओवर हियर, बिकॉज दिस इज समवेयर वी टीच यू हाउ यू कैन लुक फॉर अकाउंटिंग. आप अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं बिजनेसेस की, आप स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं बिजनेसेस की, आप अपना एक सेलिंग फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं बिजनेसेस का, आप अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, एंड डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे पढ़ सकते हैं. काफी सारे SOIC मेंबर्स कमेंट्स में भी होंगे. इफ यू लव्ड SOIC मेंबरशिप, जस्ट ड्रॉप अ लव SOIC मेंबरशिप एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे हम वंस अ मंथ कोई ना कोई सेक्टर या कॉन्सेप्ट पकड़ के डिटेल में एनालाइज करेंगे, एंड जहाँ पे हम रेगुलर इंटरेक्शन रखते हैं विद द स्टूडेंट्स एज वेल, एंड वी कीप डूइंग डिफरेंट वेबिनार्स ऑन डिफरेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, राइट. SOIC research subscription is separate. You can check the website of soicresearch.in. तो वहाँ पे है, it's self-explanatory. But SOIC membership is where we teach. It's an education course. So come in with the right set of expectations, right? It's an education course where you learn about businesses, where you learn about the concept of investing itself, right? So hopefully you loved the session. And if you want to become an SOIC member, the link is there in the description box below. You can use the coupon code SOIC bonus 10. Awesome. Awesome. Great, folks. So we have a webinar at 2 p.m. with the SOIC students. So I'll just go there. Hopefully we keep doing more of these sessions with you. Do smash the like button if you love this one.
and just drop a hell yes in the comment section. With this, I'll see you in the next Q&A session, right? Jai Hind. Thank you everyone. Jai Hind. Bye bye.